Welcome student class 12th biology. Today I have to demonstrate the experiment number 1, 2, 3 and 4. So in serial number 1 we have to discuss about the preparation of temporary mount of pollen germination. In this regard we have to take some materials like microscope, plain slide, cover slip, glucose solution, etc. Now I am explaining and demonstrating the detail of serial number 1 experiment. Okay, now I am demonstrating the experiment serial number 1. Preparation of temporary mount of pollen grain germination on slide. First you select flower for taking pollen grains. I have two flowers. This one is unopened without pollen grain, so we have to discard it. Now we take the China rose flower having complete flower, all the four whorl, stamens, pistil, sepal and petals are adhered with it. Now I have to do some activities. First you take a plain slide. It should be neat and clean. This plain slide, on it we have to put the pollen grain from flower. So first you make its surface wet by putting 1 or 2 drop glucose solution, 0.5% solution. Okay, so now I am trying to keep. First you take 1 or 2 drop glucose solution on it. Now we have to put the pollen grain on it by opening flower. Anther contains pollen grains. We have to sprinkle the pollen grains on it like this. You will find that some grains are present on this slide. Okay, now you mount it with cover slip. This is the plain and a small tiny cover slip made up of glass. You have to put this cover slip on this slide by one end and put it gradually, slanting it so that air bubble will not arrest inside it. So this is mounting of pollen grains. Okay, now you leave it for 1 or 2 hours for its germination. So each and every pollen grain will absorb glucose solution and the exine wall of pollen grain will moist and starts germinating. That will be seen by microscope later on after germination. First we set the microscope in low power, focus it, light, and on a stage you keep it on a stage, fix it with clip, and now adjust the microscope field. So you will find after 2 hours, so next day you can be able to see the germinating pollen grains. So after germination you will find in high power lens some pollen grains are germinated, few are not germinated. So on the basis of this we can count germinated pollen grain on it and
which are not germinated. So in microscopic field we can count easily and we can calculate the percentage of germination in sugar solution. If we take highly concentrated sugar solution in this demonstration, some pollen grains will not germinate. That may be harmful for pollen grains. So high concentration of sugar solution will be prohibited. So it starts with 0.5% solution and definitely it will germinate. Okay, so now you can see in the first experiment prescribed in lab manual. Okay, so we can count the pollen grain germination in temporary mound. Okay, thank you. Now we'll proceed for later. Done. Now, students, in 12th bio, we have to study about the feature of soil. Study of soil with its feature like texture, moisture, pH, water holding capacity, and its correlation with plants. So let us demonstrate the experiment. So come to the desk. Welcome back, students. Now serial number 2, we have to study about the features of soil. First we have to collect 2 samples of soil of different sites. One is of near pond site and another is in cultivating area in agricultural field. So these are 2 samples. Now we have to study its texture. First we take water and we put the soil in the beaker. Now stir it. After stirring, leave it for 5 minutes. You will find at the bottom some gravel soil or sandy soil will comes down because it will sediment fastly, and at upper point some loamy soil will be observed, and at the top of the water content you will find clay soil, that is very fine particles. So this is about texture: sandy soil, loamy soil and clay soil. This is about texture. Now we take another sample and you put it in another beaker. Now stir it. In this sample also sandy part of the soil will settle down. Some clay soil will seen upper side because it is the sample taken from the agricultural field. So according to texture, the soil particles having bigger size are gravel soil and upper loamy and the mixture of clay will found. Now we will test its pH value. So from the sample we take separately the solution of the soil taken. So we take 1 or 2 drop of the soil solution and test it for pH. For pH value we have to take the universal indicator, that is pH paper. So pH paper, you take 1 pH paper strip. It is slight yellowish in color. Normally when we
keep this in the solution. See minutely. So this soil doesn't contain any acidic or basic trace, so it is neutral soil. Okay, now take another sample for observing this. You take 1 or 2 drop of solution in another watch glass. Now we take it. I am taking another pH paper, this one. Yes. So in this sample, this litmus paper gives bluish color. So another sample of the soil is basic in nature. As we know, basic word starts with B and the color of the sample is blue. So to remember that the blue color indicates basic nature of the solution. If it will become red, so in the red, last letter in red is D and the last letter in acid is also D. If it will become red, then we will find that the solution taken will be acidic. So it is about the pH. So the pH value of the basic solution is 8 and above, up to 14, and in acidic solution the red color of the pH paper will be 1 to 6 or little more. If there is no trace of any acid or base, this will be neutral. So in first demonstration, the soil doesn't contain any acid or base. That's why the soil was neutral. Okay. Now another is clarity. Clarity. For this, you have to take another slide for observing the clarity of the water. So you take the sample, 1 or 2 drop sample on slide, put another cover slip on it and keep it mount slightly by keeping it slant way, so that air bubble will not come inside the cover slip. Now we will observe this in microscope. When we see in a high power lens, that may be 45x, here is 10x, so 45 into 10, that becomes 450 times larger. So after viewing this, no any particle is present in this, it means it is clear. If it shows some dust particle or some another materials, so then I can say that this water is not clear. So clarity is the feature of water. If there is no trace of any particle, that is clear water. If any particle is there in microscopic study, that is some particles contained in it. Okay.
Now, next is presence of living organism. Similar to this, we take the drop of water of the soil solution. If any particles like fungal spore, bacteria, or any things, if this slide contains, we will observe it in microscope, and we can say that this soil contains some fungus, that may be Fusarium, Alternaria, Gliotrachea, Penicillium, Aspergillus. So there are so many types of fungus are there that may adhere with the soil. If its presence is there, we can say that the soil contains some fungal spores, and it may be harmful for soil during the course of cultivation of crop. So correlation, if some bacteria or fungi are there in the soil that may harm soil borne diseases, if there is no any trace of anything, sometimes some rhizobium bacteria is there. If rhizobium, we know that rhizobium bacteria is found in the leguminous plant, especially in the root nodule of the root. So rhizobium as well as the blue-green algae, they are useful for soil fertility. Okay, so this is the correlation of soil features along with the agricultural crop. Okay, now I will proceed for next. Now welcome again back. Now serial number 3, the study of water, means collection of water and study its feature only with pH, clarity and presence of living organism. Sometimes we see that in serial number 2, these two are correlated, so that's why we repeat it again. Okay, now come to the dash. Student, these are two beakers, collected the water sample of two different sites. This one is pond water having some dirtiness, and this is tap water which we use in our daily life, in our home or in kitchen. So first we have to observe its pH. Again, just I explained earlier about the pH value of the soil mixture. Now this is about water. So first we take the sample solution. This is the water taking from pond. You keep it in watch glass. Now use the pH paper again. Why this? So after taking the sample from pond water, we put pH paper in this, and now it becomes bluish in color. It means the pond water contains basic material, basic solution. So due to some enrichment of
organism as well as aquatic content. So the water becomes basic. Now in another sample, we take this clear water from the tap water. So we have to use this one, and for control we are keeping the another sample of clear water. This is pH paper. So another sample of tap water taken and put it in the sample. Now it becomes greenish in color, slight acidic, but it seems green in color. It means its pH value is 7 or 7.5 something, slight. Okay, so if water is neutral, it shows the greenish color. Now in third sample we have to take the water taking from ditches. कोई गड्ढे में से पानी लिया गया है, काफ़ी दिनों से स्टेगनेंट वाटर है और उसको मैं चेक कर रहा हूँ. तो ये पीएच पेपर वेस्ट हो गया है, दूसरा पीएच पेपर मैं ले रहा हूँ. हाँ, now you keep this. Yes. Now we can easily observe that the color of this pH paper becomes pinkish, slight red. It means the water of ditches, किसी भी गड्ढे में जो पानी है उसको लिया मैंने, तो इसमें ट्रेस आया कि इसमें जो सॉल्यूशन में थोड़ी बहुत एसिडिक नेचर है. यही कारण है कि पीएच पेपर का कलर रेड हो गया है. तो रेडनेस ऑफ पीएच पेपर इंडिकेट्स दैट द वाटर कंटेन्स सम एसिडिक कंटेंट, एसिडिक मटेरियल. दिस इज अबाउट द पीएच वैल्यू. नाउ अबाउट क्लियरिटी, जो क्लियरिटी के पहले मैंने बताया है सीरियल नंबर 1 में 2 में कि स्लाइड में अगर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में, अगर कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, क्लियर है, दैट इज़ क्लियर वाटर एज वी कैन सी इन द टैप वाटर. It is clear water, that's why we drink it. But it may contain some acidic or base in a little amount, so we do not judge the water contains acid or base and simply we drink. So before eating or before drinking this water, we have to boil it, and after filtering or staining, we can use the water as a drinking water. Now organism, as in serial number 2, I explained about the presence of microorganisms in water. So if we observe some microorganism on slide during a study in microscope, then we can conclude that the water contains some microorganism. जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो टैप वाटर है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, नील. ठीक है. अगर इसमें
कोई भी डस्ट पार्टिकल हो या फंगल पार्टिकल हो, स्पोर्स हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी होगा तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में हम इसको देख पाएंगे। और इन हायर स्टडी वी कैन कोरिलेट इट विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, विच टाइप ऑफ फंगल will be present in it. As in our work, when I was in research work, I had isolated 45 fungi from the surface of lychee and mango leaf surface, and that very case we wash out the surface of mango and lychee leaf surface and keep it in PD potato dextrose agar PDA culture. So for this we have to make PDA. Just a minute, I am showing you. Okay, wait. Okay. In serial number 3 we have to observe the presence or absence of microorganisms. So for that, first we have to make PDA in Petri dish. PDA is the composition of potato extract, dextrose, some amount of dextrose, and agar powder. So after taking the mixture of these three, we have to boil it in an autoclave for 15 minutes up to 15 pound pressure. When the solution becomes like a jelly, we have to pour that solution in the Petri dish and keep it for cooling. After cooling, the surface becomes solidified due to the presence of agar powder. So now this is ready for observing the presence or absence of microorganism in the water. So this Petri dish will be kept for some times, and now we have to pour 1 or 2 drops of sample water in it. After pouring it, you keep it in autoclave. Autoclave is nothing, that is not autoclave. We have to keep this sample in freezer for cooling for 5 or 10 minutes. After taking it, keep it in oven at 15 to 25 degree temperature centigrade. So after 2 or 3 days, we can observe some colonies will be observed here. So from this colony having different color like white, black, brown, etc., we have to isolate it in another test tube. So by the process of sterilization, we take some sample and inoculate in test tube. टेस्ट ट्यूब पे भी PDA रखा होगा, उसमें टेस्ट ट्यूब में डाल करके कॉटन प्लग से इसको कवर कर देते हैं और फिर उसको हम रखते हैं, ओवन में रखते हैं 20 to 25 डिग्री सी पर, और 2-3 दिनों के अंदर उसके अंदर छोटे छोटे कॉलोनी आते हैं। क्योंकि वो आइसोलेट किया हुआ है तो सारे कॉलोनी एक ही कलर का होगा, और उस कॉलोनी में से फिर हम आइसोलेट करेंगे, निकालेंगे उस फंगल स्पोर को, स्लाइड पर डालेंगे। स्लाइड पर डालने के बाद 1 ड्रॉप ग्लिसरीन डालेंगे, फिर उसको कवर स्लिप से ढक देंगे। कवर स्लिप से ढकने के बाद माइक्रोस्कोप में उसको हम देखेंगे तो हमें बहुत ही सुंदर स्पोर्स का डायग्राम दिखाई देगा।
तो चूँकि हमने स्टडी किया है 45 फंजाई का, जिसमें 5 फंजाई जो न्यू फर्स्ट टाइम मिला था हमें इंडिया में, जो मेरी पेपर भी पब्लिश हुई थी। तो ये 5 फंजाई जो मैंने देखा बुक में, एक किताब निकलती है फंजाई ऑफ इंडिया, तो उसमें मैंने उनको टैली किया, तो देयर वाज नो एनी रिपोर्ट अबाउट दिस फंजाई। दैट्स वाई आई पब्लिश्ड दैट न्यू फाइंडिंग इन द जर्नल इंडियन साइंस कांग्रेस, दैट इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम कोलकाता। तो उसमें मेरी पब्लिश हुई थी, और हमारे जो सुपरवाइज़र थे डॉक्टर RS बिलग्रामी, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, और मैं उनके अंडर में काम किया। हालांकि मैं कंप्लीट नहीं किया उस वर्क को, क्योंकि केवी में ज्वाइन करना था, मैं उसको छोड़ के आ गया, लेकिन मैंने फंगस पर वर्क किया है। ठीक है। नाउ क्लियरिटी के बारे में मैंने सीरियल नंबर 2 में भी बता दिया कि उसमें कुछ नहीं है। अगर डस्ट पार्टिकल कुछ भी होता माइक्रोस्कोपिक स्टडी में, तो हम कहते हैं कि वो सस्पेंडेड पार्टिकल उसमें है, और अगर नहीं तो क्लियर वाटर हो गया वो। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द 4 सीरियल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द एक्सपेरिमेंट सीरियल नंबर 4, study the presence of suspended particles SPM in air at 2 widely different sites. So this is not complex, it is easy to observe. Now I am taking, okay, now serial number 4। सीरियल नंबर 4 में हमने जो कहा था कि एयर सैंपल लेते हैं 2 डिफरेंट साइट्स का। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 प्लेन स्लाइड में सरफेस पर ग्लिसरीन लगा देते हैं। एक सरफेस पर ग्लिसरीन लगाते हैं 2 स्लाइड में, और डिफरेंट साइट्स पर एक दिन के लिए वहाँ अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं। फिर उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। तो उसमें हमें मिल सकता है डस्ट हो, पॉलन ग्रेन हो, सम अनडिजायर्ड पार्टिकल हो। तो उसको हम देखेंगे कि उस जगह के एयर में क्या क्या मटेरियल, क्या क्या ऑर्गेनिज्म या सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है हवा में जो भी SPM सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, इस पर डिपॉजिट करेंगे। तो माइक्रोस्कोप में स्टडी करके पता कर लेंगे कि क्या क्या है। तो दोनों स्लाइड को हम बारी बारी से करेंगे और देखेंगे कि किस जगह पर कौन से सस्पेंडेड पार्टिकल है और किस दूसरे जगह पर नहीं है। एक दूसरा मेथड है कि इसी तरह से हम पोटैटो डिक्सट्रोज अगर मीडियम तैयार करते हैं। इसके 2 हमें प्लेट चाहिए, 2 प्लेट। एक प्लेट को हम एक्सपोज करके रखेंगे एक साइड पर, और दूसरे प्लेट को दूसरे साइड पर जहाँ डिस्टरबेंस या बाधाएं नहीं हो, सेफली रखेंगे कि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। फिर उस दोनों साइड से पेट्री डिश को हम लाएंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। अगर डस्ट पार्टिकल है डेट विल नॉट जर्मिनेट, वो जैसे कि तैसे रहेंगे। अगर फंगल स्पोर है या बैक्टीरियल कोई स्पोर है, तो इस PDA पर जो है उसके कॉलोनी ग्रो करेंगे। वो कॉलोनी के कलर से हम पता कर लेंगे कि वो फंगस का है या कुछ बैक्टीरियल स्पोर है। कभी कभी कंटेमिनेशन के कारण उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ, कुछ म्यूकस टाइप का मटेरियल सिक्रीट होने लगता है। तो हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म इसमें हो वो अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सिक्रीट कर रहा है। उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, या कुछ अदर केमिकल हो सकते हैं, जिसका हम फर्दर स्टडी करते हैं हायर सेक्शन में जा कर के।
और फिर हम दूसरा अगर पेट्री डिश लाते हैं और देखते हैं कि नहीं उसमें कोई भी फंगल स्पोर या बैक्टीरिया नहीं है, सिंपली डस्ट है। अगर पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन भी वहाँ पर जर्मिनेट करेगा, क्योंकि जब हम टिश्यू कल्चर की बात करते थे और टिश्यू कल्चर में हम पढ़ाते थे कि प्लांट के किसी भी पार्ट को अगर मीडिया पर रखा जाए, चाहे वो रूट का कोई टिश्यू हो, स्टेम का हो, लीफ का हो या पॉलन हो, तो वो ग्रो करता है। तो इस तरह से हम पेट्री डिश के माध्यम से और स्लाइड के माध्यम से हम सस्पेंडेड पार्टिकल को हम देख पाएंगे। SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को विद द हेल्प ऑफ स्लाइड और विद द हेल्प ऑफ PDA कल्चर मीडिया, इस तरह से हम बच्चे को दिखाते भी हैं अपने लैब में। और चूँकि ऑनलाइन आजकल है तो मैं इसको करके ऑनलाइन कैमरा से रिले भी करते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर listening and seeing or viewing my demonstration in this regard. I am R.S. Chaudhary, PGT Biology, केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर, डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी। ओके, थैंक यू।